Good morning, all of you. Welcome to the channel. And let's start with the today's analysis video, which is going to be for 6th of May, 2023. So firstly, crisis hit Manipur. We are seeing. And yesterday also we discussed this topic in detail कि मणिपुर की ethnic composition क्या है and क्या main reason है. अगर हमने like geography के बारे में भी बात करी थी कि क्या geography है as far as Manipur is concerned and क्या उसकी वजह से क्या reasons हैं कि मणिपुर में we are seeing riots happening. There is so much of I can use the word lynching also. So we see कि central security forces they flood the crisis hit Manipur. So central security forces they have been deployed there. Manipur DGP claims key center it has invoked Article 355. So Article 355 it becomes important for us. We'll see कि Article 355 किस बारे में बात करता है. So this is to address the state's security concerns. And then Ministry of Home Affairs it comes into the picture and it denies doing so. So defense forces say कि situation it is now under control, but अगर real ground situation की बात करेंगे तो it does not seem कि situation is under control. But anyways, moving forward. So IF it performs sorties to watch over Manipur, and then Meghalaya moves to bring natives back home. So we see कि center it has taken over the control of the security in the violence at Manipur on Friday, and 12 companies they've been like comprising around 1000 personnels of the border security force उनको deploy किया गया है. They have airlifted anti-riot vehicles to northeastern state of Manipur. So around 3200 Central Reserve Police Force personnel as well as the Army, Indian Air Force teams उनको भी deploy किया गया है. So coming to the important thing from the examination perspective, Article 355 किस बारे में बात करता है? तो it is there so that the center it takes more attention on the affairs of the state, and that is why advisor has been also sent. So basically Article 355 यहाँ पे ये लिखा गया है कि it is there so that जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो थोड़ा और अटेंशन पे करे जो भी मणिपुर में इट इज गोइंग ऑन. एंड उससे रिगार्डिंग एक एडवाइजर भी सेंड किया गया है. सो आर्टिकल 355 सेंटर को पावर देता है टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है, सो एज टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड एक्सटर्नल अग्रेशन. सो आर्टिकल 355 का ये पर्पस है. एंड होम मिनिस्ट्री ने बोला कि इट हैज डिनाइड इन्वोकिंग आर्टिकल 355. तो लेट्स सी कि एक्चुअल है क्या. बट मणिपुर डीजीपी ने ये क्लेम किया है कि सेंटर ने आर्टिकल 355 इन्वोक किया है, बट सेंटर से ऑन द पार्ट लाइक होम मिनिस्ट्री का कहना ये है कि अभी आर्टिकल को इन्वोक नहीं किया गया है. बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 355 किस बारे में बात करता है. तो सो वी हैव कवर्ड दैट थिंग. देन here we are like having it in regard to India-Pakistan ki India's decisions on Jammu and Kashmir slammed the door shut on the discussions. This is what Bhutto says. So India's decision to reorganize Jammu and Kashmir in August 2019. We saw that 2019 mein Article 370 was abrogated, and it has made it difficult for those in Pakistan who advocated engagement in the past. So this is one of the reasons. We can say that talks are not going forward as far as Indian Pakistan is concerned. So like recently we are having the Shanghai Cooperation Organizations meet in Goa. So India is chairing this year, and yeah, so the meeting is going on in Goa.
So सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि it won't release the funds to the state of West Bengal till 2024. So 2024 में we have the general elections and basically dispute is there over the funds for the MG Narega scheme to the state of West Bengal. So सेंटर का कहना ये है कि 2024 तक फंड्स रिलीज नहीं किए जा सकते हैं. सो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने 5 मई को बोला था कि सेंटर इट विल नॉट रिलीज द फंड्स टू द स्टेट जब तक ये लोकसभा पोल्स नहीं हो जाते. सो दिस इज लाइक पॉलिटिकल टोन. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ थिंग्स कैसे होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. एंड देन ऑल्सो फाइनेंस कमीशन, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, आप उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे. उसके अलावा कि कौन सा आर्टिकल बात करता है लाइक फाइनेंस कमीशन के बारे में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. एंड आर्टिकल की बात करें तो इट इज आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है. तो आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में फाइंड आउट करोगे एंड जो करंट चेयरमैन है एंड लास्ट की 2 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी थोड़ा सर्च करोगे तो दैट वुड बी helpful here. Coming to the editorial section now. So here we are talking about the horizon for India beyond G20 and SEO summits. So not just limiting ourselves to G20 and SEO summits. जो भी we can say कि yes, India it is chairing, we are holding the presidency, that is important, and India is in the limelight because of this. But we need to think beyond G20 and SU. So author of this article is very important personality, M.K. Narayan sir. He is the former director of Intelligence Bureau as well and former National Security Advisor and former governor of West Bengal. So let's start what he is talking about when he's saying India needs to go beyond the horizon, G20 and SU summit. So here we see that India's year-long presidency of the G20, the leadership of the SEO, it should not blind us to the persisting challenges जो हम face करते हैं. So इस केस में what are the challenges वो हमारे लिए important हो जाता है. मतलब कि हमें अपने आप को restrict नहीं करना है to SEO या फिर G20. और भी बहुत challenges हैं. So we need to face them, we need to deal with them and find out the solution. So that's there, and it must hence tone down जो high expectations हैं that are being generated of reaping a rich dividend from helming the 2 summits. So global peace की बात करें जिसपे India's prime minister had waxed equivalent at the last G20 summit जो इंडोनेशिया में हुआ है, it is nowhere in sight with India holding the reins. So instead अगर हम बात करें everything it points to further deterioration in geopolitical climate. So हमें further और ज़्यादा deterioration चीजें खराब होती दिखाई दी है at the geopolitical front. So there might be an impending conflict, he says. So priorities which are listed by India, which signifies its presidency. Like अगर हम priorities की बात करें, given कि we are the president of the G20 presidency हम hold कर रहे, तो हमें priorities पता होने चाहिए. तो it is climate change, clean energy, sustainable development programs, reforms of multilateral institutions, and these are likely to take a back seat. So ये बोला जा रहा है बट हमारे लिए हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. एंड इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बी अवेयर कि जो इम्पोर्टेंस है G20 की, इट अपीयर्स टू बी डिक्लाइनिंग इन टूडेज वर्ल्ड. सो इतना ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करना इज नॉट वर्थ इट वी कैन से, बट जो आउटकम्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो प्रायोरिटीज हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. सो SEO इट सीम्स टू बी समवॉट ग्रेटर ट्रैक्शन. अगर कंपेयर करें SEO एंड G20 तो SEO आज के टाइम में ज़्यादा रेलेवेंट है compared to G20. So during its presidency of the 2 institutions, India may well be called upon to chart a course जो balance करता है the contradictory demands G20 और SEO की. So it is important that there is a balance and we maintain that, taking it forward, and even more so that of the global south also. So all this leaves little room for the grandstanding and India should proceed with caution. So 2 camps and the distress. So the world may not as yet be on the brink of a global conflict. So
ऐसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट इज पेरिलसली क्लोज टू इट वी कैन से। मतलब अभी थोड़ा टाइम है वी कैन से इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, बट वी कैन से कि हम उसकी तरफ मूव जरूर कर रहे हैं। सो डिस्ट्रेस बिटवीन टू कैंप्स लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एंड रशिया। सो एक साइड यूनाइटेड स्टेट्स है या हम बोल सकते हैं वेस्ट है, वर्सेस चाइना एंड रशिया रिस्पेक्टिवली। सो ये टू कैंप्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस लीव्स लिटिल स्कोप फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया। अगर आप बात करें, दैट हैव नॉट क्लियर्ड देयर एलिजाइंस टू, like we have not declared our allegiance to either camp. So even in case of Russia Ukraine war भी ये बोला जा रहा है कि India needs to have a clear stand, but India के लिए West भी important है या USA important है, साथ ही साथ Russia भी important है। So अभी तक तो we have been balancing between both of them very nicely, बट वी कैन से कि इंडिया के ऊपर प्रेशर जरूर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएस एंड इट्स अलाइज दे आर मीनवाइल मेकिंग अ वर्च्यू of the fact that they are in a position to provide Ukraine with an arsenal of the most sophisticated weaponry available, alongside provision for training Ukraine troops also. So training भी provide की जा रही है Ukraine troops को, and we know weapons तो supply हो ही रहे हैं। So this is one thing, and इसके अलावा issues for India, they begin with our neighbor itself, that is China. So for India, apart from the war clouds की बात करें on the horizon in Europe and tensions in the East Pacific, there are several issues of deepening concern. So foremost, सबसे पहला is कि how to deal with a rampaging China. China से हम कैसे deal करें currently, which is on a major diplomatic strategic offensive across Asia, especially West Asia में। So सबसे बड़ा challenge हमारे लिए चाइना है। Give me a moment. So this is further accompanied by display of its naval prowess also, मतलब how it's been behaving and taking decisions in South China Sea also. So उसकी naval prowess का बात करें तो that is much in East and Southeast Asia में, South China Sea, and यहाँ पे हम basically बात कर रहे हैं कोरियन पेनिनसुला की भी and ताइवान स्ट्रेट वाले एरिया में भी। So it's flexing of its military muscle in Ladakh and Arunachal sectors of the Sino-Indian border also. So India में specifically we are dealing with this border issues with China. उसके अलावा yes, Indo-Pacific भी हमारे लिए important है। So Lay's response, which is like वैसे China, it is unlikely to be deterred by the vanilla Lay's response proffered by India's defense minister during his recent meeting with his Chinese counterpart. So we know कि disengagement talks, they are going on between India and China. So this is only likely to reduce the room for maneuver on India's part at a time जब China it is launching several other regional initiatives to checkmate India in the Indian Ocean region. So अगर हम Indian Ocean region की भी बात करें तो वहाँ पे भी China अपनी presence increase करने की कोशिश कर रहा है। So China Indian Ocean region forum important हो जाती है. So it has seen participation by overwhelming majority of Indian Ocean states, and also, and unlike India, which seeks to limit the conflict with China to border issues. So हमारी conflict with China, it is not restricted to only border issues. आप Indo-Pacific की बात करें, Indian Ocean region की बात करें, तो these challenges या these threats, they are also growing. Moving forward, it is like basically we can say कि arc of conflict, this is the keyword. So China इसको वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है पर्टिकुलर एरिया में, नॉट जस्ट इट वो सिर्फ बॉर्डर इशू से रिस्ट्रिक्टेड नहीं, तो इसको मतलब इसके लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को चाइना ग्रो करने की, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो चाइना इंडिया को टारगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया की जो क्लोजनेस है यूएसए के साथ एंड वेस्टर्न ब्लॉक के साथ वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम। सो यहाँ पे क्वाड भी पिक्चर में आ जाता है, एज वेल एज जो हमारी पार्टिसिपेशन है इवन इन द मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्सरसाइजेस यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो दैट्स देयर। So now talking about neighborhood in Russia, so other turmoils in India's immediate neighborhood
सो पहला चैलेंज की हमने बात करी वो चाइना से रिलेटेड है और उसके जो और फर्दर सब हेड्स थे हमने इसके बारे में बात करी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैलेंज व्हिच इज in South Asian, that is our immediate neighborhood, which is compound India's problem. So here we see कि how India की problem South Asia increase करता है. तो situation अगर हम अफगानिस्तान में बात करें, अफगानिस्तान it appears to be steadily worsening. Events in that country, they are now beginning to affect the nations on its periphery. So जो surrounding, जो neighbor countries हैं या जो आसपास की countries हैं of Afghanistan, वहाँ पे भी impact होना start हो गई हैं चीजें because of the way things are going on in Afghanistan. So India it has meanwhile lost all traction. जो भी Taliban regime hai in Afghanistan. So Pakistan and Sri Lanka to different degrees, they represent the worst case scenarios. So we know कि आज के टाइम में पाकिस्तान और श्रीलंका किस सिचुएशन में है. इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, things are not, we can say, in good terms there. So that's another challenge in South Asia as far as India is concerned. So India's relations, चाहे आप रशिया से बात करें, they also appear to be entering a prolonged phase of uncertainty. So रशिया के साथ भी जो हमारे, so this is third threat. या हमने सेकंड की बात करी विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया एंड पहला था विद रिस्पेक्ट चाइना. सो थर्ड थ्रेट हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया. सो हमारे रिलेशंस विद लाइक रशिया, यू ऑलवेज से और यूज दिस टर्म ऑफ ऑल वेदर फ्रेंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया. बट वी आर सीइंग कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इसकी वजह से वी आर सीइंग कि चाइना की रशिया के साथ क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है. एंड एट द सेम टाइम नाउ रशिया भी इंडिया बेसिकली नहीं चाहता है कि इंडिया की क्लोजनेस यूएसए के साथ या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंक्रीज हो. तो उस केस में भी एक ये न्यू चैलेंज हमारे लिए इमर्ज हुआ है. तो जो इंडिया के रशिया के साथ रिलेशंस हैं, दे आर एंटरिंग दिस फेज ऑफ अनसर्टेनिटी. तो चीजें थोड़ी लाइक यू कैन से दे आर गेटिंग डिसबैलेंस्ड. So Russian ties, they are not necessarily anchored in defense cooperation, but this has been a key factor in cementing India's relation also. So major factor जो India and Russia के relations के बीच में है, that is our defense cooperation. So as India, it looks more to the west. So यहाँ पे you can see कि we are trying to increase the closeness with the west. Specifically USA की बात करें तो हम basically try ये कर रहे हैं कि जो हमारे आर्म्स हैं या डिफेंस कॉपरेशन है उसको हम थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें, एक ही कंट्री पे रिलाई ना करें ज्यादा. तो इस केस में भी थोड़ा रशिया कॉशियस हो रहा है. सो विद रशिया चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस वो और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं. रशिया और चाइना की क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है. बोथ द कंट्रीज दे ओपनली गिविंग वेंट टू देयर बिलीफ इन द यूटिलिटी ऑफ सच अ रिलेशनशिप. सो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. एंड ब्रिक्स की अगर हम बात करें जहाँ पे वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ रशिया ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो, चाइना ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. तो वी कैन सी कि द ब्रिक्स इट हैज लॉस्ट मच ऑफ द डायनामिज्म ऑल्सो. सो इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप वो लिमिटेड है अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें. एंड फॉर प्रेजेंट इट इज लिंक्ड टू ट्रेडिंग इन ऑयल, imparting little dynamism to the relationship. So right now, specifically after the Russia-Ukraine war, we can say कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इट इज मेयरली या फिर ज्यादा रिलायंस है when it comes to importing the crude oil from Russia. So इसके अलावा there is not much dynamism या और कोई एरियाज ऐसा नहीं है जहाँ पे we are majorly cooperating as far as the economic sphere is concerned. So major dependence या major cooperation हमारी it is based on defense cooperation with Russia. So moot point क्या है? It is key while India, it is one of the few countries in the world which has managed to emerge from COVID-19 pandemic and जो resultant economic crisis है without much damage, and it is widely seen as a prospective global power. So India को आज के time में definitely we can say कि we are being seen as a prospective global power. क्योंकि जिस तरीके से हमने COVID-19 के साथ डील भी किया and उसके बाद जो impacts थे उनके साथ डील किया, that was really appreciable. So it has much to do before it attains this pinnacle. Definitely, there's a lot needs to be done, and there are many obstacles that have to be overcome before India it can achieve its predetermined goals जो हैं. So well before this, and notwithstanding its
purchase position of helping both G20 and achieve simultaneously. India should not claim to have attained its goal. तो जब तक वो अचीव नहीं हो जाते, we can't claim कि हमने अचीव कर लिए हैं. They actually need to happen in a real sense. So this is all from this article, and I will just highlight the important things once so that आप लोगों के लिए easy हो जाए, and you can take even the screenshot also. So we are seeing यहाँ पे हमने चाइना की बात करी, ठीक है. यहाँ पे South Asia and Arunachal sector were not just limited to border area. Then we talked about और जो चाइना बाकी इनिशिएटिव्स ले रहा है इंडियन ओशन रीजन में. यहाँ पे we saw arc of conflict expand किया जा रहा है by चाइना. क्वाड की हमने बात करी, जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्सरसाइजेस से हमने उनकी बात करी. सो देन वी टॉक्ड अबाउट साउथ एशिया, हमारी इमीडिएट नेबरहुड में हमने अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान श्रीलंका में जो सिचुएशन वर्सन हो रही है. उसके बाद हमने बात करी चैलेंज विद रशिया, जो हमारे चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं. डिफेंस कोऑपरेशन हमारा मेन फोकस रहा है, एंड वेस्ट के साथ हमारी क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है. तो दैट इज बेसिकली वन ऑफ द चैलेंजेस. रशिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, दैट इज विद टाइम गेटिंग स्ट्रॉन्गर. देन वी टॉक्ड अबाउट कि ब्रिक में डायनामिज्म कम हो रहा है, एंड हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है विद रशिया, दैट इज लिमिटेड टू ट्रेडिंग इन ऑयल. सो हेयर जिस तरीके से इंडिया ने कोविड-19 के साथ डील किया, दैट्स अमेजिंग, एंड we are being seen as one of the global powers. So जब तक हम goals attain नहीं कर लेते हैं, we shouldn't claim. And that's all for this article. All right, so now we can move forward to the next one. So this article, it is talking about the situation in Manipur. So कल जो important चीज़ थी from the perspective of examination, हमने वो कल बात कर ली है. वो ethnic composition की अगर आप बात करें तो we had discussed that already. and जो main reason है क्यों conflict हो रही है, कैसे geographically वहाँ पे even demographics की अगर मैं specifically बोलूँ तो वो हम कल बात कर चुके हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा important है. इसके अलावा जो tribal welfares के लिए constitution बात करता है, वो provisions आप find out कर लोगे, कौन से schedule है, then किसके पास क्या power है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो यहाँ पे इट इज़ मेंशन कि जो मणिपुर में वायलेंस हो रही है, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर गवर्नमेंट इट वुड हैव स्टेड अबव द फ्रे. सो कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वन. सो इट्स मल्टी एथनिक, नेशनल या प्रोविंशियल सेटिंग है जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं. ऐसे टाइप की अकोमोडेशन जहाँ पे डिफरेंसेस इन अ वे दैट बेस्टोज द सोशो कल्चरल रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटीज व्हाइल स्ट्राइविंग फॉर constitutional unity, equality through the governance, it is must for progress. So baki, you can just go through it once quickly. So here we're talking about switching on India's smart electricity future. तो जब हम स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यूजर सेंट्रिक डिजाइन होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट इसी तरीके से होनी चाहिए, फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए कि व्हाट विल पावर इंडिया का स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव. सो आज के टाइम में भी स्मार्ट मीटर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे या यूज नहीं किए हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज में वी आर सीइंग इन सोसाइटीज स्मार्ट मीटर्स डिप्लॉय किए गए हैं या इंस्टॉल किए गए हैं इन द हाउसेस. सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीटर्स इन द सेंस कि आपको उनको पहले रिचार्ज करना पड़ता है. आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो यूजिंग पेटीएम या वट एवर ऑनलाइन ऐप यू रिलाई ऑन, तो आपको पहले उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, एंड देन एज पर द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से money would start getting deducted, and then आपको similarly periodically आपको उनको टाइम टू टाइम रिचार्ज करना पड़ेगा. तो पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल बी अलाउड टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी. बट जो ट्रेडिशनल मीटर्स उनमें क्या होता है कि मंथली बेसिस पे आपको बिल जनरेट करना पड़ता है. तो पहले आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो एंड जितने यूनिट्स आप यूज करते हो अकॉर्डिंगली द बिल इज जनरेटेड. सो यहाँ पे दैट इज द स्मार्ट मीटर्स, हम इनको स्मार्ट मीटर्स भी बोलते हैं. सो इमेजिन एक फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर इट बिकम्स योर एडवाइजर ऑन ऑल द थिंग्स
जो इलेक्ट्रिक है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका एक तरीके से एडवाइजर बन जाए ऑन ऑल द थिंग्स इलेक्ट्रिक। सो अब वो आपको बताएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज कैसी है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में कितना यूनिट जाता है, या किस पर्टिकुलर अप्लायंस पे आप ज़्यादा रिलाई करते हो। फिर मंथली आपको वो ये एक पैटर्न मिल जाएगा, एंड एज पर द सीजन ऑल्सो आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। सो इट नोटिफाइज यू कि चेंजेस इन पावर टैरिफ सो दैट you plan your activities during low tariff periods. So in a way you can basically reduce your electricity bill, and obviously this would be also increasing the energy efficiency. So it points you to appliances जहाँ पे you are using more electricity than they should. It suggests कि आपके पास और क्या options हैं so that you replace them with the new efficient options. So more than we are seeing 5.5 million smart meters they have been installed in India, and over 100 million they have been sanctioned. So target is कि we replace 250 million conventional electric meters with the prepaid smart meters by 2025-26. So here you can like just रिमेंबर द टारगेट्स, लाइक टारगेट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमारे लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि टारगेट इज कि रिप्लेस द 250 मिलियन जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं विद द प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स बाय 2025-26. So we are supporting this initiative by grant cum financing to help the power distribution companies they become financially sound and efficient so that they are able to deliver these services. But on ground कुछ challenges हैं in achieving this target. So let's delve into that. So reaping technology benefits as per a study, if we go by a study of the Council on Energy, Environment and Water, study finds out कि majority of the smart meter users हैं, they have already begun to experience some of the technology के जो benefits हैं. They've already begun to experience some of the benefits because of the installation of the smart meters. So the study, it covered about 2700 urban households जो prepaid and postpaid smart meters को use करते हैं. So स्मार्ट मीटर्स में भी प्रीपेड भी हैं, पोस्ट पेड भी हैं. तो मोस्ट ऑफ द वंस जो मैंने देखे हैं या मैंने यूज भी किए हैं, दैट इज प्रीपेड. सो लाइक जो मेरे घर में डिप्लॉयड है दैट इज प्रीपेड मीटर. आपको पहले उसको रिचार्ज करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट एज पर द अमाउंट यू रिचार्ज वो विद टाइम कम होता जाता है. तो पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर्स भी है कि वंस यू कैन लाइक यूज द इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मंथली बेसिस पे आप बिल पे करोगे. So here when we were talking about target, so half the users उन्होंने report किया है improvements in the billing regularity. So obviously आपको बिल पे करना पड़ेगा तभी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो. 2/3 ऑफ द यूजर्स उन्होंने बोला कि पेइंग बिल्स वो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आप स्मार्टफोन के थ्रू बिल्स पे कर सकते हो, यू कैन गेट द मीटर रिचार्ज. So 40% of users and they alluded to multiple co-benefits like greater sense of control again. They felt this over their electricity expenses, and there was drop in instances of electricity theft also. Obviously smart meters ke through you can't do this, and it improved the power supply to the locality also. So challenges की बात करें तो firstly कि half the users they were not using the smart meter mobile app, नहीं use कर रहे थे. Many they were unable to even access detailed electricity bills, leaving them doubtful about their bill computation and deductions. And solving these, it will help bring smart meter revolution in India. So यहाँ पे basically we're talking about 4 steps which can be taken so that we have this smart meter revolution in India. So here we are seeing कि India is moving towards more digitized power sectors through smart metering interventions. We must pursue user-centric design होना चाहिए ताकि users को ज़्यादा complications या challenges face करने को ना मिले, and जो apps का design भी हो वो भी थोड़ा easy and simple रहे. So we see कि जो deployment strategy है वो भी user-centric रहेगी, तो it would be important. So 4 suggestions हैं कैसे diverse actors they can set up this.
and they can work forward in this area. So पहला, Ministry of Power, it needs to drive a nationwide campaign किया जाना चाहिए so as to educate the consumers कि smart meters के benefits क्या हैं, उसको कैसे use करते हैं, and improve भी वो कैसे कर सकते हैं अपना uptake of the smart meter apps. So smart meter apps को कैसे use कर सकते हैं, क्या different features रहेंगे, and smart meters के benefits क्या हैं, so that more users they are attracted towards them, and वो ensure करें कि they are deploying those meters, getting them installed in their houses also. So यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेशन वाइड कैंपेन करने की बात है, यहाँ पे हम बेसिकली अवेयरनेस की बात कर रहे हैं. सो इसके अलावा सेकंड इज कि डिस्कॉम कंपनीज जो है दे मस्ट को ओन द प्रोग्राम एंड दे नीड टू टेक द ड्राइविंग सीट. सो मेजॉरिटी ऑफ जो स्मार्ट मीटर्स इंडिया में है दे आर बीइंग डिप्लॉयड बाय advanced metering infrastructure service providers which are responsible for installation and operation of these AMI systems for the project lifetime of 10 years. So discoms unko closely work करना चाहिए with them and to ensure कि smooth installation रहे and recharge experience भी users का smooth रहे, कोई problems ना आए. Third is discoms, the system integrators and technology providers जो हैं उनको collaboratively work करना चाहिए in devising और बाकी innovative and scalable data solutions. So जहाँ area जो area भी missing है उन पे there needs to be a collaboration between different stakeholders. फोर्थ आता है पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स, उनको रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, कंज्यूमर्स को और एम्पावर करना चाहिए टू अनलॉक न्यू रिटेल मार्केट्स. करंटली जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कंसर्निंग द फेजिंग आउट द पेपर बिल्स, arrear adjustment and frequency of recharge alerts, buffer time, rebates, and data privacy, they are scattered across different regulatory orders or simply they are missing. So India is on a unique journey of meeting its growing electricity demand while decarbonizing its generation sources. So we have this target of decarbonization going net zero by 2070. So smart meters, they comprise critical part of the transition toolbox. Definitely they'll be playing an important role by way of enabling responsible consumption, efficient energy management, cost-effective integration of distributed energy sources. So these are the three keywords, and user-centric design rahega, deployment philosophy rahegi, so it will be crucial for the success of India's smart metering initiative. So हमने यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा बात या सारी बात ही स्मार्ट मीटर्स के ऊपर थी. सो बट इट वाज गुड, हमने 4 स्टेप्स के बारे में बात करी, 4 सजेशंस जो लिए जाने चाहिए. उसके अलावा मतलब हमें एक यहाँ पे टारगेट पता चल गया एंड यहाँ पे हमें 3 कीवर्ड्स भी मिल गए. सो यू कैन नोट देम डाउन. So here it is talking about India की aviation industry. हमने देखा कि Gophers they have filed for bankruptcy. So the aviation industry it needs policy changes. So क्या policy changes suggest किए जा रहे हैं, and regulatory overhaul. So जो इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन था since the outbreak of COVID-19 pandemic, which is Go First, it was to go into mid-air stall and seek bankruptcy protection. So हमने देखा कि क्या रीजन भी क्या है behind the bankruptcy या फिर like what caused the bankruptcy of Go First airline. So ये हम डिटेल में ऑलरेडी ये सब ले चुके हैं. So हमें ज़्यादा जहाँ फोकस करना है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या किया जाना चाहिए या किस एरिया पे हमें और वर्क करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो यहाँ पे कोविड-19 की बात की गई है कि उस टाइम पे कैसे क्या रहा, एंड जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट हैं दे इंक्रीज्ड. सो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव हो गया, बट अगेन थिंग्स दे आर रीबाउंडिंग बैक एंड civil aviation sector is also a part of it. So we are seeing ki airline it is now moving to the NCLT for initiation of the insolvency proceedings and accompanying a moratorium on outstanding credit. So instead they sought aircraft deregistration and repossession. So the outcome NCLT notwithstanding, jo developments rahengi, they hold a mirror to the industry systemic
infirmity. So rival carriers हैं जो बाकी airlines हैं, SpiceJet की बात करें, it is simultaneously facing an irate overseas lessor who has moved the insolvency tribunal over the unpaid lease rentals. So major जो issues अभी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को फेस करने को मिल रहे हैं, फर्स्टली इज जो टैक्स स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो कॉस्ट है बहुत हाई रहती है. सेकेंड इज जो रेगुलेटरी अपैरेटस है दैट इज ऑल्सो आउटडेटेड. सो ओनस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टू फाइंड क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोल्यूशंस हो सकते हैं अगर इंडिया की जो स्ट्रगलिंग एयरलाइंस है इफ दे वांट टू रीच द क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड. सो रेगुलेटरी अपैरेटस आउटडेटेड एंड जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसकी वजह से जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई लेवल पे रहती है. Again, here you can see the wrestlers protesting at the protesting site and endurance athletes. So in a test of staying power, their physical and the mental strength pushed to the limit. Women and men wrestlers, some Olympians also, medal winners bhi hain, many who are like learning the ropes. The stay put at Jantar Mantar protesting against the जो भी sexual harassment की allegations लगाए गए हैं, one of the most powerful politicians in the sport against. So one of the coach, he says कि we have left our families back home to join this fight for our sisters, and the women, they fear consequences pertaining to their career and society also. So if we do not sit here, then who will sit and who will protest? And then Bajrang Punia, he's a wrestler, he says that they are trying to break us, and this is not about competition and participating, it is about sexual harassment. In this picture you can see they've been practicing, jahan pe bhi protest site hai, they like practicing there, and जो भी daily routine है they are trying to ensure कि वो उसको regularly follow करें. सो कास्ट बेस्ड सर्वे की अगर हम बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट आया था कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर नहीं है टू कैरी आउट कास्ट बेस्ड सेंसस, एंड इमीडिएटली जो भी सेंसस अभी किया जा रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट ऑफ बिहार, उस पर इमीडिएटली स्टॉप लगाया जाए, उसको स्टे किया जाए. एंड उससे रिगार्डिंग हमने कल डेटा प्राइवेसी से भी रिगार्डिंग बात करी थी कि कुछ कंसर्न उससे रिलेटेड राइज हो जाते हैं क्योंकि अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट किया गया उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. सो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, ही सेज ये जो बॉर्डर सिचुएशन है विद इंडिया दैट इज स्टेबल. सो ही सेज कि जो दोनों साइड्स है दे शुड ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड एम्बार्क ऑन न्यू पाथ ऑफ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस. इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट दिस इज पॉसिबल जब LAC का जो डिसएंगेजमेंट है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाए. इसके बाद ही आने वाले टाइम में इट वुड बी पॉसिबल कि वी मूव ऑन अ पाथ टुवर्ड्स हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस. सो यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स प्लान क्या है, उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा जो इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है टू द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो बेसिकली कॉमर्स मिनिस्ट्री इज एक्सप्लोरिंग कि और बाकी क्या ऑप्शंस है टू कोप विद दिस यूरोपियन यूनियंस डिसीजन टू इंट्रोड्यूस कार्बन टैक्स. सो बेसिकली जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे टू द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एक कार्बन टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे. सो वी आर लुकिंग एट कि और क्या बाकी ऑप्शंस है लाइक रिटेलिएटरी टैरिफ्स क्या इंडिया इम्पोज करना सही रहेगा, which is a challenge at even the like World Trade Organization. So ये अगर हम आगे जाते हैं सोच रहे हैं कि will be also imposing retaliatory tariffs, but then उसकी वजह से WTO में एक और issue हो सकता है क्योंकि then WTO it does not support any such measure जिसकी वजह से trade distortion होता है, या फिर measures to help जो smaller Indian exporters हैं कुछ ऐसी measures लें ताकि हम उनको support कर सकें.
So that's CBAM. It is the Carbon Border Adjustment Mechanism of European Union. And next 3 years में इसको implement किया जाएगा. तो इंडिया के जो मेटल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट हो सकता है. So Prime Minister is going to attend the Bastille Day parade in Paris. So he's accepted the invite from the French President Emmanuel Macron to be the guest of honor at the Bastille Day parade in Paris 14 July को. So this parade basically it marks liberty, equality, and fraternity. So this is the second time that an Indian Prime Minister will be the guest of honor for July 14 celebration. So ये इस type का question भी आ चुका है prelims में कि these idols basically liberty, equality, fraternity कौन सी country से लिया गया है? So it is from France. So these are basically inspired from the French Revolution. And India and France were also celebrating a 25 years of strategic partnership 1998 में जो start हुई थी. तो जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है regarding the non-communicable diseases, it has been renamed. So the addition of many new diseases and disease groups जो हैं new health initiatives हैं, they have prompted union government to rename the program for controlling and prevention of non-communicable diseases. So we are seeing कि जो instances and numbers of the non-communicable diseases, they are also increasing. So we have a proper like program to deal with that. So since जो disease groups हैं जो बाकी सारे initiatives हैं ensuring कि they fall within this program, so उसको एक ऐसा name देना कि it becomes much more relevant and realistic. So Ministry of Family and Health and Family Welfare, it has also decided to rename the portal which enables population enumeration, risk assessment, screening of the 5 common non-communicable diseases. So कौन से ऐसे 5 common non-communicable diseases? Hypertension है, diabetes, oral and breast and cervical cancers of the population above 30 years. So we are having the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke. So बाकी और जो diseases add किए गए हैं list में, that includes the non-alcoholic fatty liver disease, chronic kidney disease, and there are more also. So there's a need कि scheme in its present form it may subsume जो भी बाकी types के non-communicable diseases हैं. So इस प्रोग्राम को नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. So that's all, and you can like find out more about the features of this program. Coming to the world page, so here we are seeing Port Sudan. Atlas P you need to locate. So civilians they complain of the neglect as fighting rages on in the capital of Sudan, which is Khartoum. So Operation Kaveri ke under India, it is basically evacuating Indians from Sudan. So USA's National Security Advisor going to visit Saudi Arabia. So when we talk about West Asia, so वहाँ पे we are seeing कि how things they have reordered, they have restructured, specifically जब Saudi Arabia and Iran they restored their diplomatic relations. So उसकी वजह से चीजें बहुत ज़्यादा change हुई हैं as far as West Asia is concerned.
सो वेगनर ग्रुप के बारे में आप फाइंड आउट करोगे क्या है ये एक्चुअली. सो रशिया's वेगनर चीफ threatens to pull the troops out of Bamuk. सो बामुक आपको लोकेट करना इंपॉर्टेंट है. Where does it lie? अगेन नेपाल की पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. Things are very like volatile as far as the politics is concerned in the country of Nepal. So Nepal's RSP it withdraws the support जो right now government थी प्रचंडा led government. So it has decided to withdraw its support to Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, so is famously known as Prachanda government. Instead, they will be now staying in the opposition. So the move it will not immediately affect the position of the incumbent government, but it may result in political crisis कुछ टाइम के बाद. So अभी के लिए कोई ऐसा impact नहीं होगा या उनकी majority पे कोई impact नहीं होगा. So WHO it declares कि COVID-19 pandemic it is no longer an emergency. However, taking note of जो recent spike in cases देखने को मिले specifically Southeast Asia में और West Asia में, so UN Health Agency says कि that even though जो emergency phase है वो over हो चुका है, but pandemic खत्म नहीं हुआ है. So that's there. And in this picture, you can see कि lantern dining experience, which was developed by a Japanese hotel 2022 में, so that जो customers हैं, they could avoid the COVID-19 mask. And this was a kind of a structure that was formed in restaurants in Japan. Coming to the business page here, we're seeing कि January to March जो gold की demand है, it falls 17% because of high prices as per the World Gold Council. So थोड़ा बहुत आप World Gold Council के बारे में find out कर सकते हैं. And demand obviously कम हुई है क्योंकि prices increase हुए हैं. तो this is inverse relationship between the two factors. So we saw record high prices of gold, so that could have convinced the buyers to defer their purchases, anticipating कि आने वाले टाइम में प्राइस करेक्शन हो सकता है, and then they will be buying it. So they reached the lifetime high of rupees 64,500. So they're just skyrocketing both jewelry and investment demand. India में drop हुई है 17% on year-on-year basis. यहाँ डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है हमने समझ लिया, देख लिया जस्ट कि क्या चल रहा है. And US job growth that stays strong. Unemployment rate it has fallen to 3.4% in the last month. So positive signals, but अभी जो उनका पॉलिसी रेट था उनको उसको भी रिसेंटली हाई किया गया था बाय द US Fed. एंड देन एट द सेम टाइम हमने देखा कि वन मोर बैंक इट हैज फेल्ड इन USA. सो कुछ लाइक इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, कहीं से हमें थोड़ा अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही है. एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि जो वेज इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इवन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. So India is said to mull the foreign investment in nuclear power. So India में कितने nuclear power plants है, कहाँ पे located है, कौन सी country के साथ we are collaborating and working together, all of that becomes important. And इससे regarding हमने देखा कि Germany ने it has completely phased out the nuclear energy. So क्या India के लिए ये एक अच्छा option है या नहीं, या फिर like as we say कि we are having that transition of transition towards green energy, तो क्या उस एरिया में उस सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है when we talk about green energy, or you can say clean energy, renewable energy. So India it is considering overturning a ban on the foreign investment in its nuclear power industry and allowing greater participation by domestic private firms also. So इस measure से या इस step से we can see कि we are trying to increase our reliance on the nuclear energy, या ensuring कि yes nuclear energy आने वाले time में
एक मेजर सोर्स बन जाए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मेजर्स दे हैव बीन रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट पैनल जो सेटअप किया गया था बाय थिंक टैंक नीति आयोग. सो एम इज कि हम हमारा जो कार्बन एमिशंस है उसको कम कर सके. न्यूक्लियर इट इज द फोकस, क्योंकि बिकॉज वो हमारी हमको एनर्जी सप्लाई कर सकता है 24/7. सो अगर हम बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो वो हमें 24/7 एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, बट न्यूक्लियर एनर्जी दे कैन डू इट. सो दैट इज द थिंग. एंड इंडिया का भी करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज अराउंड 6,780 मेगावाट्स. सो सेबी ने बोला है टू लाइक ब्रोकर्स को बोला है सेबी ने टू लिमिट द यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स. सो आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, सोशल मीडिया या सोशल इन्फ्लुएंसर्स. बट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एक नया टर्म, इतना नया टर्म भी नहीं बोल सकते, बट यस, नंबर ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं, स्पेसिफिकली कोविड-19 के टाइम के दौरान. तो उस टाइम पे वी आर नाउ सीइंग कि देयर आर मोर नंबर ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया साइट्स पे, जहाँ पे वो आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो. सो सेबी ने बोला है ब्रोकर्स को कि आपको इंश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का यूज है उनको लिमिट किया जाए ज्यादा से ज्यादा. So now we move to the Financial Express. So here, let's see what is the important thing. So Apple का जो इंडिया में business है, that has seen double-digit growth. So let's see what does the Apple CEO thinks about their future growth in India. So I really feel कि India, it is at a tipping point. It's great to be there, and the dynamism in the market and the vibrancy, that is unbelievable. So definitely India is one of the major attractions of the global businesses, and also we are the largest emerging economies globally. So here we having the ports minister. So he says कि we have been able to spearhead speedy execution of the Sitaway port, which is in Myanmar, with an aim to boost trade prospect of Northeast India in the coming years. So Sitaway port, Myanmar में, it is located in the coast of Myanmar. हम्बनटोटा पोर्ट आपको फाइंड आउट करना है, जनरल मतलब बहुत कॉमन पोर्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए. एंड यूक्रेन में भी आप फाइंड आउट करोगे अगर कोई पोर्ट्स लोकेटेड है या नहीं. सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. सो जो जीएसटी वाला लॉ है, उसमें वी आर सीइंग कि जो फेक इनवॉइसिंग है उससे रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिबेट किए जाते हैं, वो एक इशू है एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड. सो जीएसटी अथॉरिटीज दे आर सेट टू क्रैक डाउन ऑन जो भी ये फेक इनवॉइसिंग के इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं. सो अ नंबर ऑफ मेजर्स दे आर बीइंग वर्कड आउट सो एज टू इंश्योर कि आने वाले टाइम में ऐसे इश्यूज कम हो सके एंड वी आर एबल टू handle them. So fake and non-genuine registrations and they are being used to fraudulently pass on the input tax credit to unscrupulous recipients by issuing invoices without any underlying supply of the goods and services. So fake invoices generate किए जाते हैं and जो भी tax उसमें show होता है उतना आप input tax credit claim करते हो, बट एक्चुअली में ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल नहीं होते, बट वो इसलिए उनको हम फेक इनवॉइसेस भी बोलते हैं. सो इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट एंड स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव कंडक्ट की जाएगी रिगार्डिंग दिस थिंग बाय सेंट्रल एंड द स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन during the period from 16 May to 15 July. So it will help detect जो भी suspicious and fake GST numbers रहेंगे, to conduct requisite verifications की जाएंगी, further remedial action to weed out जो भी ये fake billers हैं from the GST ecosystem to safeguard the government revenue.
तो गोल्ड डिमांड से रिगार्डिंग हम ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं फ्रंट पेज पे, एंड इवन द हिंदू न्यूज़पेपर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है. सो इट इज लूजिंग शीन. अगर हम जिस डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ग्रोथ ज्वेलरी सेगमेंट में भी, इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में भी it has fallen by 17%. तो ज्वेलरी में 2022 में अगर हम देखें 94.2 टन्स बेसिकली ज्वेलरी डिमांड रही या बाय किया गया, एंड 2023 में इट हैज फॉलन टू 78. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 41.3 था, एंड इट इज नाउ फॉलन टू 34.4 इन 2023. तो दोनों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादा बेसिकली लोग किसके टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट. सो अभी तो ऑब्वियसली इट इज ज्वेलरी. आप लोग देख सकते हो ज्यादा लोगों का लाइक बोल सकते हैं ना मेंटल पीस या trust is in buying gold jewelry rather than investment. So investment से भी ज्यादा थे trust on buying the jewelry. And as I told you कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में आप थोड़ा और फाइंड आउट करोगे, एंड अगर कोई रिपोर्ट्स हैं ऐसी, कोई ऐसा इंडेक्स है that they release. सो अभी भी जो वीट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन इट कंटिन्यूज, एंड लिफ्टिंग ऑफ द बैन इट हैज बीन रूल्ड आउट एज ऑफ नाउ. सो इंश्योरिंग कि पहले डोमेस्टिकली एडिकेट हमारे पास स्टॉक रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ताकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन लाइक इंक्रीज ना हो. सो रिटेल वीट इन्फ्लेशन की अगर हम बात की देखिए, मतलब ट्रेंड भी समझने की कोशिश करें तो यू कैन सी अक्टूबर 2022 से वी हैव दिस डेटा, एंड you can see कि earlier inflation अक्टूबर के टाइम में it was 17.6%, and increase हुई maximum was 25.4% in February this year. So अभी मार्च के months में it has declined. So we are like having basically good harvest. So उसकी वजह से we can say कि supply ज़्यादा है तो inflation would be able to come down. So अभी के लिए जो export ban है it continues. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसकी रेगुलेशन की बात करें तो इससे रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन इट इज अगेन ब्रिंगिंग अप वन ऑफ द लॉज. उसके ऊपर हमने प्रॉपर डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस किया है. we can go like and watch that video. उसके अलावा here it is being written कि जो generative artificial intelligence है it portends a significant dehumanization of civilization which can only be tackled by right combination of legal devices and industry self-regulation. So ये दो factors बहुत important हो जाते हैं when it comes to regulating the generative artificial intelligence. and इसके बारे में आप और find out करोगे. I am be repeating this thing कि ये बहुत important topic है. यहाँ पे clarity होना is very important. So we seeing a green signal for the jobs. So artificial intelligence की बात करें, automation they have stoked anxiety कि आने वाले time में क्या jobs ऐसी technology की वजह से और कम हो जाएंगी कि नहीं. So given all these concerns, when we have a look, World Economic Forum Future of Jobs 2023 report release करी है. They have clearly spelled out कि जो artificial intelligence की potential है, creative and destructive दोनों, उसका impact on job क्या हो सकता है. So this report talks about that. So what comes as a self in इसकी जो economies है which are reorienting themselves towards being more climate friendly, and they open up many opportunities for job creation. So जो green areas हैं basically green signal for the jobs ये बोल रहे हैं. जो हम energy transition की बात कर रहे हैं या फिर renewable energy sector में ज़्यादा job opportunities emerge हो रही हैं. So you can see hiring increase हो रही है, and employers they say कि green focus a jobs booster.
सो इंडिया की लार्ज डिमांड सप्लाई गैप है ग्रीन जॉब्स में. सो विंड एनर्जी में यहाँ पे बेसिकली ब्लू वन इज शोइंग कि एस्टिमेटेड जॉब्स वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्रिएट की गई एंड एस्टिमेटेड वर्कफोर्स कितनी ऐड की गई. तो जॉब ज्यादा क्रिएट की गई इन विंड सेक्टर, यूटिलिटी स्केल सोलर सेक्टर में अगेन जॉब ज्यादा क्रिएट की गई. रूफटॉप सोलर में यू कैन सी कि कितना ज्यादा स्कोप है एंड गैप यहाँ पे बेसिकली सिंस डिमांड सप्लाई गैप की बात हो रहा है तो बहुत लार्ज है. तो जॉब ज्यादा है, वर्कफोर्स जो ऐड की गई वो कम है. Coming to the forex reserves, so they rise to 10-month high. सो फॉरेक्स रिजर्व्स का आपको पता होना चाहिए किन फैक्टर्स की वजह से वो इंक्रीज हो सकते हैं, किन की वजह से डिक्रीज हो सकते हैं. एग्जाम में डायरेक्टली वो आ सकता है. सो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी दे रखा है. इट इज शोइंग कि हाउ दे हैव परफॉर्म्ड, बेसिकली कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया में चेंज हुए हैं. ये पीरियड था कोविड-19 के टाइम का जब हम शार्प डिक्लाइन देख रहे थे, स्टीप डिक्लाइन था. मिनिमम पॉइंट रीच किया, उसके बाद वी अगेन स्टार्टेड राइजिंग एंड थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिला. उसके बाद वी आर अगेन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड. सो राइट नाउ प्री कोविड लेवल्स की बात करें तो इट वाज 547.3 बिलियन डॉलर्स. राइट नाउ इट इज 588.8 बिलियन डॉलर्स. सो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के वो भी पता होना इंपॉर्टेंट है. फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जो मेजर कंपोनेंट है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स का. दे हैव इंक्रीज नियरली 5 बिलियन डॉलर्स and they are expressed in dollar terms में. Foreign currency assets, it includes the effect of appreciation or depreciation of non-US units also like euro, pound, yen which are held in the forex reserves. So ये currencies भी part हैं of the forex reserves and जैसे exchange rate change होता है accordingly forex reserves की जो value है वो भी change होती है. Then second component forex reserves की बात करें, gold reserves भी होते हैं. They have dropped and special drawing rights हैं. That is also the third component of forex reserve. Second component हमने बात करी gold reserves and पहला है foreign currency assets. इसके अलावा देवर जो SDR है special drawing rights हैं, they have increased by $35 million and जो हमारी रिजर्व पोजीशन है IMF में that was down by $4 million. So central bank intervenes in the spot and forward markets to prevent runaway moves in rupee. So अभी हमने जब देखा इंडियन रूपी इट वाज डेप्रिशिएटिंग क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल है दैट वाज एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स. तो आरबीआई इट इंटरवीन्ड एंड इट सप्लाइड मोर ऑफ डॉलर्स ताकि इंडियन रूपी ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो. सो उस केस में भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स फॉल होते हैं क्योंकि डॉलर्स का सप्लाई मार्केट में इंक्रीज किया जाता है बाय आरबीआई. तो आपके पास जो रिजर्व्स है ऑब्वियसली वो कम होंगे ना जब आरबीआई वुड बी सप्लाइंग मोर ऑफ dollars in the market so as to support the Indian rupee. So coming to Indian Express, so here we will see what are the things जो हमने अभी cover नहीं किए हैं so far in the previous two newspapers. So if we go by कि Shanghai Cooperation Organization में कौन कौन member countries हैं? So Pakistan, Russia, Uzbekistan, India, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. So these are the member countries of SCO.
तो एडिटोरियल पेज पे अगर हम देखें कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल विच इज नॉन पॉलिटिकल, so here it is, this article it is talking about मणिपुर में क्या सिचुएशन है. I have repeated this a number of times कि क्या important topics है जो हम already discuss कर चुके हैं. So yeah, we are seeing ground for Manipur rights. It was laid by dilution of provisions to protect tribal interest. So जो provisions हैं which ensure protection of the tribal interest, the tribal community in Manipur, उनको dilute किया गया, and this was one of the reasons why we are seeing riots and violent protest in the state of Manipur. इसके अलावा जो tribes हैं, that also becomes important. आप फाइंड आउट करोगे जो भी ट्राइब्स पिछले साल, लास्ट के 2 साल में आई शुड से न्यूज में रही, कौन से स्टेट में है एंड क्या रीजन था, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना चाहिए, इम्पोज नहीं किया गया है. देन अभी हमने लाइक आर्टिकल 355 के बारे में भी बात करी कि दैट इज बीन इन्वोक्ड, बट सेंटर में जो होम मिनिस्ट्री है इट इज डिनाइंग कि अभी आर्टिकल को इन्वोक नहीं किया गया है. आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में कब इस आर्टिकल को यूज किया गया था, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट्स रूल की, तो अभी इम्पोज नहीं किया गया, बात की जा रही है कि इम्पोज किया जाना चाहिए एंड सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी होनी चाहिए, सो दैट दैट इज द ओनली प्लॉजिबल वे टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर फॉर नाउ. सो प्रेसिडेंट रूल्स रिगार्डिंग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पूरा प्रोसेस है, किसके पास ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. So restoration of law and order, it may be immediate need of the hour to foreclose जो भी impending human tragedy है. Ardent positions taken by both the hill tribes and जो valley communities हैं, they will need a shifting of constitutional gears to accommodate their distinctive aspirations. So कल हमने बात करी थी कि हिली एरिया में ट्राइबल्स रिजाइड करते हैं, वैली में नॉन ट्राइबल्स है, जो मीटी कम्युनिटी है वो रिजाइड करते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चल रही है. Again, this article is also talking about Manipur. It needs peace, so violence stop की जानी चाहिए. Identities and fault lines उनको negotiate करना चाहिए with the tact. Center has to translate political success into enduring peace. So again, यहाँ पे सेम चीजें रिपीट की गई हैं जो हमने कल डिटेल में डिस्कस करी थी. So export bans hurt the trade in the long run. So government must let market balance supply and demand through price mechanism. So यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए एक्सपोर्ट बैन को कंटिन्यू रखोगे तो उसकी वजह से लॉन्गर रन में ट्रेड पे भी इम्पैक्ट होता है. तो इसलिए आपको अकॉर्डिंगली मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए, जो डिमांड एंड सप्लाई अपने आप बैलेंस होगा थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. सो फियर्स आने वाले टाइम में वी आर प्रिडिक्टिंग कि आईएमडी ने बोला है कि वी माइट हैव एल नीनो दिस ईयर, सो इट एडवर्सली अफेक्टिंग द अपकमिंग मॉनसून, क्लियरली वेइंग ऑन इन द Prime Minister's mind, and especially with national elections, they are also less than a year away. ठीक है, पॉलिटिकल चीज हो गई है यहाँ पे. शुगर एक्सपोर्ट्स पे भी वर्चुअल बैन है. सो 2022-23 की बात करें, शुगर ईयर अक्टूबर से सितंबर तक होता है शुगर ईयर. सो इट इज ओनली अप टू 6.1 मिलियन tons of exports allow किए गए थे as against record 11 million tons shipped out in 2021-22. So sugar exports भी decline हुए हैं when we compare these two periods. And इसके अलावा जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या पूरा मैकेनिज्म है, एंड ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट. सो क्या एमएसपी है एंड जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस हैं वो क्या है, जो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस दिए जाते हैं, एमएसपी नहीं दी जाती, एफआरपी दिया जाता है फॉर शुगर केन, एफआरपी बाय द गवर्नमेंट, एंड देन स्टेट्स भी जो एसएपी देती हैं दैट इज फॉर शुगर केन.
So extreme precaution with sugar, it is nowhere comparable to last year's outright export ban on wheat. So अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले कि wheat के export पे जो ban है that still continues, and शुगर केन में इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है एंड क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. तो पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स की बात करें, दिस इज है वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस GS2. सो यूएस इट शुड रिस्पेक्ट इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं इंडियन ओशन में एंड जो बाकी जियो पॉलिटिकल अरीनास है वहाँ पे, नॉट एक्सपेक्ट कि दिल्ली इट टू टेक वाशिंगटन साइड इन एवरी थिएटर. तो ऑब्वियसली दोनों साइड को ही रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो इंडिया इट इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट विद अ डिस्टिंक्टिव वैल्यू सिस्टम अपहोल्डिंग नेशनल सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ. वेदर यूक्रेन की बात करो, ताइवान की बात करो, दोनों मतलब हर एरिया में, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में दैट इज इंटीग्रल टू वैल्यू सिस्टम. But that also prevents India from becoming a party to any conflict. So that is also there at the same time. So India believes ki in striving for peace on the principle of inclusivity. तो यहाँ पे कुछ keywords use किए गए, you can note them down. And US, with its rich tradition of constitutionalism and commitment to rule of law, it is a natural partner for India in its endeavor to carry out value system forward. सो चाइना, इंडिया और यूएसए के लिए, दोनों के लिए कॉमन चैलेंज है इंडो पैसिफिक रीजन एंड इवन बियॉन्ड. ये भी हमने आज डिटेल में बात करी. बट द नेचर ऑफ काउंटरिंग दैट चैलेंज इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. किस तरीके से आप इस कॉमन चैलेंज के साथ डील करोगे वो हर रीजन में डिफरेंट है. मतलब हर कंट्री का डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट beliefs हैं. So it's imperative कि जो US appreciates and upholds India's primacy in managing Indian Ocean priorities before expecting India to get involved in the imperatives of the Pacific region. And bets are not always put based on short-term hypothesis. So sometimes they're also put with a long-time vision. So India के लिए पहले Indian Ocean region है, उसके बाद Indo-Pacific या फिर जो Pacific Ocean वाला एरिया है वो है. सो अगर हम टर्की की भी बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चल रही है. सो एर्डोगन इट फेसेस टफ इलेक्शन अमिड अर्थक्वेक एंड देन इन्फ्लेशन इज अनदर चैलेंज. सो है पहले भी लाइक टर्की इट वाज इन न्यूज़ फॉर द इन्फ्लेशन थिंग, हाइपर इन्फ्लेशन भी देखा गया है. सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट अबाउट दैट कि कौन से टाइम पीरियड में था, क्या उस टाइम पे रीज़न थे. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. तो अर्थक्वेक हमने देखा कितने लोगों की जान गई एंड देन ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया पूरा एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस अलग हैं. तो यहाँ पे हमारे को लाइक फिगर्स नहीं दे रखे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन. सो थोड़ा सा आप गूगल करके देख सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है इन टर्की. सो कमिंग टू द एक्सप्लेन पेज, एज ऑलवेज यहाँ पे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो कोविड-19 इट इज़ नो लॉन्गर इमरजेंसी, WHO ने बोला है. क्या चेंजेस हुए हैं सो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Let's just quickly go through जो भी important details हैं. And so why did WHO declare कि COVID-19 इट्स अ पैंडमिक. सो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको पैंडमिक क्यों डिक्लेयर किया गया. कुछ कंडीशंस होती होंगी जो आपको पहले फुलफिल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. SARS-CoV-2 इट वाज नोवेल वायरस अबाउट विच बहुत कम पता था इनिशियल डेज में. लेटर जैसे जैसे
पेशेंट्स नंबर इंक्रीज होता गया एंड वी केम टू नो अबाउट कि क्या क्या सिम्टम्स हैं एंड क्या challenges difficulties हैं. So simultaneously we came to know about it. And immune cells they started attacking the patient's own organs. So ये देखा गया this tended to happen more in elderly population. And जहाँ पे पहले like people they were suffering from comorbidities like diabetes. So there are 3 conditions जो आपको fulfill करना important है for declaring a disease a public health emergency. So number 1 is कि it is spreading across several countries. Definitely true. COVID-19 के case में this was fulfilled. Second is कि it is leading to serious illness, hospitalizations, and deaths also. Third is कि there is serious stress on the health systems because of this disease. So COVID-19, it fulfilled all these 3 conditions, 2020 and 2021 maybe. That's why it was like declared a health emergency, a pandemic. So ये 3 conditions हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा why has now WHO removed this designation now? So उसके पीछे भी कुछ factors होंगे. So over the last 3 years, doctors and researchers they have figured out a lot कि method of transmission क्या रहे and highest risk of severe disease and death क्या था, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा रिस्क पे थी, बेटर एंड चीपर एंड पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स के बारे में पता चला, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो वर्क करता है वो हमें पता चला, मेडिसिन टू प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज हमने डिस्कवर करी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी केम अप विद द वैक्सीन इन लाइक सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड. सो जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट दे हैव इंश्योर्ड कि हम उनको और स्ट्रेंथन करें एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स रोल आउट की गई. इंडिया में मोर देन 90% द पीपल अबव द एज ऑफ 12 years दे हैव रिसीव्ड देयर 2 प्राइमरी डोजेस. सो यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात आ जाती है कि लोग लाइक जैसे जिनको इन्फेक्शन हुआ या ओवर इन्फेक्टेड एंड जो बाद में वैक्सीनेटेड भी हुए, सो दे हैव डेवलप्ड दैट्स हाइब्रिड इम्यूनिटी कि आपको इन्फेक्शन भी हुआ कोविड-19 से, आप सफर भी किए एंड आपने वैक्सीनेशन भी करा ली, तो दोनों तरीके से यू हैव द इम्यूनिटी. सो अब बेटर प्रोटेक्शन हो गई है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन. So health systems now they are no longer stressed. So this is one of the reasons why the status it has been withdrawn by WHO. So यहाँ पे then it is talking about कि कैसे pandemic unfold हुआ इंडिया में, इतना important नहीं है. How will WHO declaration it will change now the disease management thing. So since it is no longer an emergency, so कैसे अब disease management चीजें कैसे they would be impacted and how they would change. So कोई लॉकडाउन्स नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज now they are like functioning normally. Containment and control measures now they are no longer needed, and so much will change on ground with this WHO declaration. Again, a repeat regarding Manipur's ethnic fault lines. So Kuki and Naga tribes they point out कि ट्राइबल एरियाज जो हैं दे आर 90% ऑफ द स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया. सो जोग्राफिकल एरिया की बात करें, ट्राइबल एरियाज तो हो गया हिली एरियाज, दे कंप्राइज 90% ऑफ द स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया. बट जो बल्क ऑफ द बजट है, डेवलपमेंट वर्क है, दैट इज फोकस्ड ऑन मीटी डोमिनेटेड इम्फाल वैली. सो मेजर फोकस किया जा रहा है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज इन द वैली एरिया, इम्फाल वैली एरिया, जहाँ पे नॉन ट्राइबल्स मीटी कम्युनिटी रिसाइड करते हैं. So each of these groups has its aspirations and insecurities, that's true. And जो पहले के grievances है they have also triggered because of these new developments. So that's how things they unfolded in the state of Manipur. 1993 में भी हमने देखा कि मुस्लिम्स मीटीज जो हिंदू मीटीज जो हैं they clashed with Pangals who are Muslims, and there was horrific violence involving the tribal Nagas and the Kukis, which saw
more than 100 cookies massacred in single day and thousands driven out of their homes. So that's there. ये देखो हमने कल सारी चीजें डिस्कस करी थी, कुकी मीटी डिवाइड क्या है, फियर्स क्या है आज के टाइम में, एंड रीसेंट अर्नेस्ट के ऑब्वियसली अंडर दिस बैकड्रॉप हमने बात करी थी. सो यहाँ पे एक नई चीज है कि वाई Churchandpur, why this area it is under focus. So Kuki Zomi dominated जो Churchandpur है, it is the states के south western corner पे है, and plains भी हैं and hills दोनों area हैं. So if we go by the census figures, 2,71,000 according to 2011 census, that is mostly Christian population जो reside करती है इस area में. And Panchayati Raj Ministry 2006 में it named it among the country's poorest districts and it remains abjectly poor. So not just state level पे, country level पे, this is poorest district in India, Churchandpur, which is in Manipur. It is like resided mostly by the Christian population. So 2015 में जो Metis population है of the valley, they protested and they demanded कि ILP जो है in the Imphal city, equally intense protests they were seen in Churchandpur, countering the demand and protesting the introduction of laws by the then chief minister of the Congress, one of which said कि state would determine who was a Manipuri and who was not. Another said कि a person could own the land in state only once government had established their authenticity as a Manipuri. So इससे रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हो गए लोगों के, एंड स्टेट ने बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन मणिपुरी है कौन नहीं है, एंड state would be basically determining the authenticity thing कि कौन मणिपुरी है, कौन authentically मणिपुरी है. सो ये फॉरेन टैग वाला इशू चल रहा था कि लॉन्ग बर्डन बाय द फॉरेन टैग. ऑब्वियसली आप लोगों को कैटेगराइज करोगे एज फॉरेनर्स, एंड इफ दे डू नॉट बिलोंग टू द मणिपुर स्टेट, तो ऑब्वियसली people would unrest, and then we saw कि Kuki Zomi tribes they reacted violently to this. So tribes को अगर आप बोलोगे या आप उनको foreign tag दे दोगे या बोलोगे कि they do not belong to this state, so that's why people they responded violently back then. And people were killed. Protesters, they burnt down Churchandpur, home of the then health minister. So state government, it had written to the center saying कि protests they had taken on a communal color. So bills were subsequently withdrawn. So recent unrest का अगर हम reason देखें तो forest evictions and demand for ST status for the Metis, it have been the most prominent recent triggers, जिसकी वजह से we are seeing कि Metis and the tribals they are divided on a number of issues and this has widened over the past decade. So आज के time में these are the two main reasons why people are protesting या whatever is the situation right now in Manipur. So now what happens to the go first के जो planes हैं and how the leased aircraft जो हैं they are repossessed. So how can you can like repossess जो भी lease या rent पे आपने aircrafts ले रखे हैं. So after the National Company Law Tribunal NCLT Thursday reversed its order on go first urgent plea for the voluntary insolvency resolution proceedings and a moratorium on its obligations, the aircraft lessors moved quickly, seeking deregistration and repossession of the 20 planes leased to the low-cost airline owned by the Wadia Group. So they filed applications with the aviation's regulator, which is the Director General of Civil Aviation, using their irrevocable deregistration and export request authorization, which empowers जो lessors हैं उनको empower करता है to get their aircraft off the registry of the company where the lessee is based and repossess and fly them out in cases like lease payment defaults अगर देखने को मिलते हैं तो power definitely lessors के hands में है, and they can go with like deregistration and ensure कि they fly out their planes to the respective countries.
So definitely airlines, they everywhere they're using a mix of कुछ owned aircraft होते हैं, कुछ leased aircraft होते हैं. So that's there, and there is this convention on the international interest in the mobile equipment, commonly known as Cape Town Convention. So this is very, very important for PT, and related 2001 protocol hai on matters specific to aircraft equipment. They are key elements of the global aviation sector that aim to protect the lessor's interest in case of defaults by the lessee. सो ये कन्वेंशन है एंड इसका दूसरा नाम है. इससे रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए इंडिया इट इज अ सिग्नेटरी टू दिस और नॉट, एंड क्या हमने इसको रेटिफाई किया है या नहीं. सो अंडर द CTC, a lessor it can seek deregistration and export of the aircraft without consent of the lessee airline using the irrevocable. So ये power है through this irrevocable deregistration and export request authorization in the hands of lessors. एंड जिसको आपने एयरक्राफ्ट लीज पे दिया है उनके पास कोई पावर नहीं है, उनकी कोई परमिशन आपको नहीं चाहिए. सो एयरलाइन इट कैन नॉट रिवोक द लेसर्स IDERA राइट्स विदाउट द लेटर्स कंसेंट. सो CTC इन इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था कन्वेंशन को 2008 में, बट इट्स इनकॉर्पोरेशन लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो दैट रिमेन्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. सो कम्प्लीटली उसको भी लीगल फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, दैट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. सो लास्ट CTC रिलेटेड जो चेंजेस हुए इंडिया के एविएशन रूल्स में दैट टुक प्लेस 2018 में. There we simplifying जो deregistration process है and export of the aircraft through this provision of IDERAs. However, experts they feel कि कुछ provisions हैं of IBC pertaining to the moratorium on the assets are in conflict with CTC and IDERA provisions. So this is why lessors they vehemently opposed go-first NCLT plea also, and admission of which it would put their aircraft under freeze. सो क्या प्रोसीजर है आइडेरा का. सो टू स्टार्ट दिस प्रोसेस जो लेसर हैं वो अप्लाई करेंगे टू DGCA सीकिंग टू इन्फोर्स एन आइडेरा with regards to a specific aircraft. So this is the first step. Usually जो separate applications हैं they are filed for each aircraft. हर aircraft के लिए separate applications file की जाती हैं with all relevant details आपको provide करना पड़ता है. So DGCA which is the regulator immediately post those applications website पे post की जाती है, notify किया जाता है all airport operators in India. Date of application it is considered the date of declared default, and DGCA moves to deregister that aircraft within 5 working days after that date. So time period is within 5 days. So जो airport operators हैं उनके पास 5 दिन होते हैं to raise the bills related to the aircraft going back 3 months and to send them to the lessor. So other government entities like intergovernmental organizations हो गई, private providers of the public services in India, they can also raise the bills in this window. So a goods and services tax certificate that is also sought from the lessee. So जब lessor it clears बाकी सारी जो भी ड्यूज हैं and the submitted certificates of the payment to the DGCA, regulator issue करता है permission to the air to export that aircraft. तो उसके बाद आप aircraft को export कर सकते हो. Plane can leave after any bill जो raise किए जाते हैं by the operator of the aircraft where the plane it is parked are cleared. तो सारे bills clear होने के बाद आप export कर सकते हो. एंड पहले के प्रेसिडेंट्स अगर हम देखें पहले कैसे हुआ है. सो अगर हम जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी की बात करें तो इट वाज फर्स्ट बिग टेस्ट पर्टेनिंग टू आइडेरास फॉर इंडिया. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां इसको यूज भी किया गया. सो मोस्ट ऑफ जो 100+ प्लेन्स थे जेट एयरवेज की फ्लीट में दे वर ऑन लीज and lessors they repossessed most of them after deregistration in an efficient regulated and structured तरीके से. तो उस टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई in terms of deregistration. So over the past couple of years, lessors they have repossessed through the IDERA route and a few aircraft that were being operated by no frills carriers. SpiceJet के केस में भी इसको use किया गया है. So that's all about this topic and even for today's newspaper analysis. And thank you so much for joining us. Do hit the like button and also subscribe to the channel.